How to tackle the extreme sagging after weight loss or bariatric surgery of the chest in both men and women. So for the breast, चाहे वो मेल हो और फीमेल, द ट्रीटमेंट रिमेन्स एम क्या है, स्किन को एक्सेस स्किन हैज टू बी रिमूव्ड एंड द निपल एरिया हैज टू बी लिफ्टेड अप. सो फर्स्ट इन फीमेल्स, इफ इट इज नॉट वेरी सिवियर एंड साइड्स में बहुत ज्यादा फैट एंड स्किन हैंग नहीं कर रहा है, देन वी कैन डू अ ब्रेस्ट लिफ्ट विद ऑगमेंटेशन. सो वी पुट इन अ सिलिकॉन इम्प्लांट and lift up the breast. So silicone implant with breast lift. If the breast tissue is reasonable, बहुत ज़्यादा sagging है लेकिन वॉल्यूम ठीक है, तो हम खाली लिफ्ट कर सकते हैं. बट यूजुअली पोस्ट बेरियाट्रिक सर्जरी 20, 30, 40 kgs weight loss happens, and साथ के साथ there is a lot of loose skin here. So what we have to do is we have to do breast lift with augmentation and removal of all of this skin in a procedure which is called upper body lift. तो यहाँ से यहाँ तक scars आते हैं. इंडिया में generally most patients don't like to do it, but outside India this is a very very popular procedure. In men, the treatment is gynecomastia and upper body lift. Usually this comes down like this. तो अगर हम खाली gynecomastia करें and liposuction, fat removal, that does not solve the problem because of excess skin. So what is recommended is upper body lift, complete removal of this amount of skin, and the nipple is put as a free nipple graft. Nipple को निकाल देते हैं and then at the end of the procedure it is stitched back and it maintains a reasonable shape. Sensation can take a lot of time to come back, but gives a very very normal looking chest, and we can remove skin right till here in the upper body lift procedure.